So hello friends, let me show you another example of view model. Let me explain first. So now this time we will see view model, which basically view model factory. So let me first create view model factory. So basically already we know about the view model. What is the basically meaning of view model? And view model factory is the basically class, okay, that is going to nothing but initiate the view model, basically going to initialize the basically view model. Okay, if anything we want to provide directly, okay, instead of directly providing the view model data, okay, we can provide the data through the व्यू मॉडल फैक्ट्री डायरेक्टली हम यदि डेटा व्यू मॉडल के थ्रू से प्रोवाइड करते हैं that may be leak the basically security of the basically view model class. That's why basically view model I am saying here, okay, it is the basically initialization of the basically view model class actually. मतलब जब कभी भी हम कोई अभी को व्यू मॉडल के क्लास को कोई भी आपको वैल्यू इनिशियलाइज करें तो उसको डायरेक्टली इनिशियलाइज ना करके हम आपको व्यू मॉडल फैक्ट्री के थ्रू से बेसिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट द व्यू मॉडल फैक्ट्री. Okay, let me explain the example. Okay, suppose there is a we have basically one edit text, okay, and here is a basically button. Suppose the button is add button. Button is add button, and here it is the input field. Okay, suppose the input field user has given the input as 0. Okay, so by default it is showing the 0 value or any default value. Okay, suppose the user has given here 120. Okay, and whatever value is here the starting value. Okay, whatever is the value starting value is here. Okay, default value is here. Okay, that default value is going to add with this input field. Suppose we have the default value as 0. Okay, we have the default value as 0. Suppose we have the default value as 0. Then if we will click the add button, if we will click the add button, if we will click the add button by entering 120, okay, in the input field, then what will be the new value? New value will be it is 0 plus 120 is equals to 120. This is the basically this addition value. Okay, so like this, suppose it is not 0, it is suppose the default value is 10. Okay, then 10 plus 120 it is 130. Okay, like that. So this is my previous example. I am going to change in the previous example only. Just let me do some changes here. Okay, so here I am going to take one edit text, match parent, it is rep content, id, it is input. Okay, int, enter a value, it is going to swing top to top of parent, top to top of parent, on the top of the parent. Okay, now this is basically here. Let me show you the text here. What is the text here? Basically 120 is showing here. Now I want to show this 120 TV count note 80 input. Okay, and this will be on the bottom of the parent, end of end, starting this top to top of, bottom to bottom of, no, bottom to bottom of,
and to end of find top to bottom of top to bottom of top to bottom of button count. Start to start of sorry top to top of, just remove it, top to top of. Good. Just give me some margin from top, margin top, just 50. Fine. Yeah, so this is our UI basically. Here is the basically our default value. Default value, just I am removing it from here. Now fine, fine, good. So this is our UI. Okay. And here this is basically button count, button add IM, just changing the ID. Okay, just change the text also here, add. Fine, good. Here is the TV starting count. Okay, good. So fine. I am removing this thing. Also, view model I am taking as it is, no issue. View model I am just taken as it is, no issue. And in the view model, okay, view model, okay, no issue. So no issue. Let me also change this method, remove this method. Fine. That. Okay. Fine. Now what we have to do basically we have to what basically we have to do, we have to basically हम लोग को दिखाना क्या है बेसिकली कि यहाँ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। यूज़र जो भी यहाँ पर इनपुट कर रहा, जब ऐड बटन को प्रेस करें तो इनपुट के साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड होकर के मुझे आपको सम दिखे। दिस इज आवर बेसिकली मेन पर्पस, ओके, यूजिंग द व्यू मॉडल एंड व्यू मॉडल फैक्ट्री एक्चुअली। सो फाइन, तो व्यू मॉडल ठीक है, तो व्यू मॉडल ठीक है। सो हमने यहाँ पर दिया क्या, जो भी आपने काउंट दिया आपको यहाँ पर, सो सपोज काउंट मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, सो गुड। मैंने क्या कंस्ट्रक्टर ले लिया, इस कंस्ट्रक्टर में मैंने एक वैल्यू पास कर दिया, स्टार्टिंग वैल्यू सपोज वेल स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू that is of integer type, okay, private variable suppose it is count, of integer type, okay.
Yeah, you have to go to this. No issue. Just I'm taking one init block that will basically initialize init block, and here basically going to write count is equals to starting value. Starting value. Now function total count. Get total count. Get total count integer type. Returning integer type. And in this value, the total count is going to take some input. So it is the variable input of integer. Integer, and now it is going to return input plus and just write one count value here, total. That is get 0 suppose. Just initializing it from the starting value. So total is equals to starting value, starting total. Set set total input plus total plus input, setting the total value. Function get total is also going to return int return. Now let me create ViewModelFactory class that is going to nothing but initialize the ViewModel. Offline class main activity ViewModelFactory. ViewModel ViewModelFactory. That will basically ViewModel provider ViewModel provider the factory. Okay. Now that will extend the basically ViewModel provider dot factory class. Okay, fine. To we have to override the
method. Basically, one override method is yet on create method. On create method basically control plus O to see the override method. Okay, जिस method को override करना control plus O press करेंगे. So override it will return what T type of basically one view model class. Okay, so what basically we have to do here basically, let me check if model class is 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 assignable from main activity view model dot class, then basically we have to return then basically we have to return main activity view model as T type. Okay, T type. Now, but view model is going to view model factory is going to provide one initial value to the view model actually. So for that purpose also I have to create one constructor. So well private well starting count that is of integer type. Okay, so this is here starting count, or it will throw some exception. Suppose this class is not found somewhere. Okay, फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि व्यू मॉडल फैक्ट्री को जो हमने व्यू मॉडल क्लास दिया वो मिला ही नहीं, तो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, दैट मीन्स इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन. illegal argument exception, that is basically unknown view model class. Unknown view model class. Fine. Now come to the main activity class. So first make the instance of private pair view model factory. Factory main activity view model factory. Factory main activity view model factory. Just now initialize here view model factory is equals to main activity view model factory. Now we have to provide here the initial count value, starting count value here. Suppose the starting count value is here 0. Okay. Now starting count value is, suppose it is 0 here. Then we have to also first, okay, so सबसे पहले आपने व्यू मॉडल फैक्ट्री को इनिशियलाइज किया. नाउ give this view model factory to the basically view model class. See here one parameter is view model factory. So view model factory. Okay, you can use here this in the annual basis. Just a modification.
Fine. Now binding dot tb starting count dot set text is equals to view model dot get count, get total. Get total dot to string. Okay, fine. Binding dot button a dot set on click listener. Okay, now so here we have to first set the count na. So view model basically dot one method is here set count, set total value. So total value we have to pass the input value na. So input value how we will pass, binding dot get input dot text dot to string. To string we are nothing but passing the to string it. Fine. Set total is a input integer type. So type dot to int dot text dot to string, first to string or to int. Okay, fine. सेट किया, वहां पर सेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, बाइंडिंग डॉट बाइंडिंग डॉट टीबी स्टार्ट काउंट डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट गेट टोटल डॉट। ठीक है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। व्यू मॉडल के सबसे पहले एक क्लास है। ओके, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग काउंट ले रहे हैं हम लोग, है ना। एक टोटल वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल एक लोकल वेरिएबल है। उसको जो भी व्यू मॉडल फैक्ट्री से जो वैल्यू आएगा वो व्यू मॉडल फैक्ट्री से कहाँ चला जाएगा, व्यू मॉडल को गया और व्यू मॉडल से आकर के आपको टोटल वैल्यू पहले इनिशियलाइज हुआ, स्टार्टिंग वैल्यू, है ना। और यहाँ पर आपको सेट किया गया जो इनपुट आपको यूजर डालेगा, और जब बटन को क्लिक करेगा तो आपको टोटल काउंट कैलकुलेट होगा। व्यू मॉडल फैक्ट्री बेसिकली वन क्लास है आपको, जो कि आपको व्यू मॉडल को आउटसाइड क्लास क्या करता है, बेसिकली इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इस व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास को एज इट इज आपको जितना भी व्यू मॉडल क्लास बनाओगे एज इट इज आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। बस केवल अपने व्यू मॉडल क्लास को जाके केवल चेंज करना, पैरामीटर को जाके केवल क्या करना, चेंज करना, नथिंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एज एक्सपेक्टेड इट विल रन, आई थिंक हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड होगा। चलिए देख लेते हैं। काउंट वैल्यू अभी आपको जीरो दिया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग काउंट यहाँ पर क्या दिया, जीरो दिया था। ठीक है, नाउ सपोज कर लीजिए कि अब यहाँ पर हमने दे दिया 120, 120 ऐड क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, सेट कर दिया है इनपुट, जो भी इनपुट आया और टोटल के साथ हमने सेट कर दिया इसको। सब क्यों हो रहा है इसमें, लेट मी चेक 1 सेकेंड। डिलीवर लगाते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं।
120 में, ठीक है। चलते हैं सेट टोटल के पास। सेट टोटल F9 प्लस F9, इनपुट आपको 120 है, सही तो है, सही है। टोटल प्लस इनपुट, टोटल अभी आपका 0 है और इनपुट आपका 20 है, तो ये कितना रिटर्न करेगा? ये तो रिटर्न करेगा 120 ही रिटर्न करना चाहिए इसको, 120 रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, टोटल कितना है? टोटल में भी 0 है। फाइन, कोई बात नहीं, कोई बात। तो इस इनपुट सेट कर रहे हैं तो यहाँ इसको देने की ज़रूरत होगी नहीं, इसको डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, टोटल इक्वल टू दिस। पर फिर से रन कराते हैं। let me give your input 120, total total input जाना चाहिए यहाँ पर, चलिए वो देखते हैं। गेट टोटल 120, फाइन एज एक्सपेक्टेड। सपोज आपने दे दिया यहाँ पर 1100 एज एक्सपेक्टेड। इसको रोटेट करता हूँ, सपोज 20, ओके एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। नाउ सपोज our starting value is 120, let me run again, starting value is 120. Now suppose we are going to add 200, okay, okay as expected, okay. So let me explain once again. सो ये मैंने एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल व्यू मॉडल के थ्रू से, ठीक है, एक्सप्लेन किया मैंने व्यू मॉडल को विद व्यू मॉडल फैक्ट्री। सो व्यू मॉडल फैक्ट्री का यहाँ पर मेन पर्पस क्या है कि व्यू मॉडल को बाहर से आपको क्या करना, आउटसाइड व्यू मॉडल क्या करना, इनिशियलाइज करना है। जैसे आपको मैंने पिछली आपको वीडियो में आपने देखा होगा व्यू मॉडल को मैं डायरेक्टली जाकर के हार्ड कोडेड इनिशियलाइज कर रहा था, ठीक है। तो हार्ड कोडेड इनिशियलाइज ना करके आपको व्यू मॉडल फैक्ट्री से डेटा पास कर रहे हैं, व्यू मॉडल क्लास को कर रहे हैं। सो व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास आपको सिंपल एज क्लास होगा, ये आपको जितने भी आप व्यू मॉडल क्लास बनाओ और उसके लिए व्यू मॉडल फैक्ट्री बनाओगे तो ये क्लास एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज केवल करना होगा तो केवल आपका ये पैरामीटर चेंज होगा और यहाँ पर आपको व्यू मॉडल क्लास का नेम केवल चेंज होगा, एज इट इज आप इसको कॉपी कर सकते हो। नाउ व्यू मॉडल के पास में क्या दिया, एक आपको कंस्ट्रक्टर दिया था जो कि आपको इनिशियलाइज करेंगे हम बाहर से व्यू मॉडल फैक्ट्री से, व्यू मॉडल फैक्ट्री का डेटा हम देंगे आपको, व्यू मॉडल को देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपल आपको लॉजिक लिखा होगा। उसके बाद क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले यदि आपने व्यू मॉडल फैक्ट्री को यदि यूज किया हुआ तो व्यू मॉडल क्लास को इनिशियलाइज करने के पहले फैक्ट्री क्लास को बेसिकली इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यदि आपको कोई कंस्ट्रक्टर बना रखा हो व्यू मॉडल फैक्ट्री को तो वो कंस्ट्रक्टर का वैल्यू पास करना पड़ेगा और उसके बाद आपको व्यू मॉडल क्लास आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो व्यू मॉडल क्लास को हम क्या करेंगे, फैक्ट्री क्लास का इंस्टेंस पास करना पड़ेगा और फिर बात बाकी आपका एच है आपको। थैंक यू।